सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. स्वागत है आपका द प्रिंट में, और खास करके हमारा जो कार्यक्रम है पॉलिटिकल अड्डा। इस पॉलिटिकल अड्डे में आज का हमारा सवाल है कि 2023 में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस अपना फॉर्च्यून बदल पाएगी? क्या प्रधानमंत्री को सेटबैक मिलेगा, या जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस होगा, कैसी पॉलिटिक्स बदलेगी? तो इन तमाम मुद्दों पर ढेर सारे हमारे पास व्यूअर्स के सवाल हैं और इन मुद्दों को हम समझेंगे। और हमारे साथ 2 मेहमान हैं, प्रोफेसर संजय कुमार जो कि CSDS के को डायरेक्टर, इससे पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, और संजय जी की मैं देख रहा था तो 12-13 किताबें इन्होंने लिखी हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, और इनसे बेहतर पॉलिटिक्स को और कौन समझ सकता है, नोटेड सेफोलॉजिस्ट, और साथ में पॉलिटिकल एडिटर DK सिंह। तो दोनों से सवाल होंगे जो हमारे व्यूअर्स ने सवाल पूछे हैं, और पॉलिटिकल टर्न क्या होगा, क्या इवेंट्स कैसे टर्न करेंगे। तो संजय जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि आपको एक ब्रीफ कैसा 2023 का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इंडिया में दिखता है? क्या आपको लगता है कि जो 9 स्टेट के असेंबली इलेक्शन होने हैं उससे इंडियन पॉलिटिक्स 2024 को रीड किया जा सकता है, या फिर जैसा कि अभी आपने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने कहा था कि असेंबली इलेक्शन से 2024 के लोकसभा इलेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं वो 3-4 दिन पहले आया, और मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन में 3-4 दिनों में कोई अंतर आया है। ओपिनियन आज भी वही है, वही बरकरार है। विधानसभा के चुनाव के नतीजों से लोकसभा में के चुनाव के नतीजों का आकलन करना, मुझे लगता है आज के नजरिए से भूल होगी। क्योंकि अगर 2018 के बाद अगर आप देखें, 2018 हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण है। 18 में कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है, इन्हीं राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है ये हम आपसे छुपा नहीं है। दिल्ली का उदाहरण है, ऐसे और भी राज्य हैं जहां पे हमें उदाहरण देखने को मिलता है कि वोटर आज स्प्लिट वर्डिक्ट दे रहा है। विधानसभा के चुनाव जब हो रहे हैं तो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है हमारे राज्य में सरकार चलाने के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हैं, जब वो देश की एक तरह से सरकार चुन रहे हैं, उनके दिमाग में प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं। तो इसी के लिए मैं इस बात को कहूंगा कि 2023 के जो चुनाव होंगे उसके जो भी नतीजे हों, उससे 2024 का सीधा सीधा आकलन कर पाना मेरे समझ से भूल होगी। It may not be a turning point for Prime Minister Modi, but what did you say about the BJP? See, these days, if you look at the politics of BJP, Prime Minister Modi cannot be separated from BJP because he is the face of BJP. BJP as a party is strong, but I think Prime Minister Modi's popularity, his style of working, his own stature adds to BJP's popularity. So I don't see a turning point even for the BJP or for Prime Minister Modi. BJP, in my opinion, 2024 elections is all set to do well. Well means, in my opinion, if I read the verdict, if I read the voters' mind correctly, in my opinion, 2024 is a race where the winner is already known. The winner or the person, the party which is going to be ahead of the race, that is going to be BJP, certainly, no doubt about that. But from a point, say, sometime around December 2017 or early 2018, when the BJP was in power in as many as 21 states, down to 12 odd states now, obviously the BJP is losing somewhere, losing its ground as far as the assembly elections are concerned. We have to compare with comparable. What is happening for the last couple of years may be compared, not what was happening 10 years ago. If we go back to 2000, say, between 10 and 14, the Congress was very strong. So but we can't compare what was happening, what was the voters' mind in 2010-11 compared to what is going to be in 2024. Even if BJP is losing, and we have to look at these states carefully, even if BJP is losing
some state elections. But look at the defeat. Defeat does not mean that the BJP has been wiped out. It is not the kind of defeat Congress has suffered in, say, Bihar, UP, Bengal, Andhra, Tamil Nadu, and now in Gujarat, almost. Gujarat, look at the vote share decline. And one indicator is the vote share. That gives you an idea about the support base. So, yes, you can say MCD election, BJP lost, but vote share has gone up. Himachal, BJP has lost, but it is not lagging far behind the Congress in terms of vote share. So if you look at even the defeats of BJP, Bengal, BJP could not win election, but BJP is the dominant political party there. So if we go state by state, even if you look at those states where BJP lost election, it does not give me a signal that BJP has performed much worse compared to how BJP performed in the previous election. So that's one point. Another point is that we know that voters are voting differently in an assembly elections, and their consideration of voting is different when they vote for the Lok Sabha election. This is not only hypothetical. We have seen that happening since 2018, not in one case, but at least in 5-6 states. Don't you find it alarming for the BJP also that when Modi is the face, people are coming to the party? But say 10 years later, when you look at the BJP's prospects from now, when Modi will not be the face, from that point of view, how do you see the progress in the last few years? Now, this is a different question, because earlier we were talking about discussing 2024. And my opinion is 2024 Lok Sabha election, in my opinion, BJP is absolutely safe. But when we are thinking of 10 years down the lane, then things would be very, very different. It's very difficult to predict what might happen 10 years from now. But yes, this should be a matter of concern for BJP, because Prime Minister Modi is the face of BJP. He has been able to mobilize a lot of support base for BJP. But I also share the view that BJP is not going to disappear. It's not going to, go down drastically in 10 years from now, even if Prime Minister Modi is not at the helm of affairs. Look at the support base of BJP, where BJP has expanded. Why I think BJP has now a much deeper support base compared to what it used to be, say, in 98, 99 elections when BJP came to power as an NDA. Now BJP's support base has expanded much deeper in the rural India, much deeper among the poorer classes. And these are the sections of voters who don't swing from one side to another very quickly. It takes a lot of time for these. They are kind of a more stable voters compared to the urban voters. So earlier BJP was only a party of the urban support base. Now BJP's roots has gone deep into the rural India, among the poorer sections of the society, and that makes BJP's support base far more stable now compared to what it was in 99. And why I keep referring to 99, because that was the Vajpayee time, and that was the time when BJP came to power and India formed the government. Do you see a turning point for the Congress in 2023? Not in terms of its prospect in 2024 Lok Sabha election, but as a party, because it has been on a continuous slide. See, as a party, I think there are 4 important elections. There would be 4 important elections for Congress. And these are 4 relatively big states: Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh. If Congress manages to do well in these 4 states, I think this will be a turning point for the party. Party workers will get, would become more enthusiastic. The kind of demoralization which we see or feel among the Congress workers, they will all come over from that demoralized kind of a mindset. So that is going to give a new lease of life to the party. And also remember, party's new president will get a legitimacy, because under his leadership, if party wins 2 or 3 elections, if not all 4, then I think Congress would be somewhat different Congress compared to what we see now. And when I say slightly different Congress, in terms of how the leaders within the party will look forward to this party, because at the moment we get a sense even large number of political leaders within the Congress, they are in the party, but they also don't have a lot of hope being in the Congress, because they don't see a bright prospects for the Congress in 2024. That this whole scenario is going to change.
whether Congress will do well or not in 2024. It will also help Congress in performing slightly better. I'm not again relating it to this performance will certainly lead to Congress very good performance in 2024. That may not happen, but at least there would be a slightly better performance of Congress in 2024 if they manage to win few state assembly elections, which are crucial in 2023. And what's your assessment of the Bharat Jodo Yatra? See, Bharat Jodo Yatra, some people are getting very enthusiastic about, a lot of crowd, lot of people coming in the rallies, in the Bharat Jodo Yatra. My own sense is that, yes, at times in some states, large number of people have accompanied Rahul Gandhi. There have been a lot of crowd which has come. But my own reading of this is that these large number of people constitutes mainly the Congress workers, the party workers. There is no spontaneity. It's not that a leader has come to the state or a city and people are enthusiastic enough to come and have a look at that leader. That connect, I don't think Rahul Gandhi has been able to make. And that makes me believe that, yes, there is a makeover about the image of Rahul Gandhi. He was seen as earlier he was being seen as a reluctant politician, not giving enough time to politics. That image has got a little bit changed. To a great extent, people now have started feeling that, oh, this is a man who can spend time in politics, etc., which is important for a leader and for his party. But I would put a big question mark on whether this Bharat Jodo Yatra is going to deliver any electoral benefits to the party in the coming election. But can this yatra be a turning point in Rahul Gandhi's political career? At the moment, I get some hints of that. At least his image, he has been able to change his image among the common people. I think we need to still wait for a couple of elections to take place, and the role Rahul Gandhi is going to play in those elections as a party leader. Only then I think we will move in the direction of getting a sense whether Rahul Gandhi as a leader, his image is going to change drastically based on Bharat Jodo Yatra. संजय जी, आपको लगता है कि जो कर्नाटका है बेसिकली अपोजिशन यूनिटी का भी एक टेस्ट केस या टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें कि पिछली बार जेडीएस का जो वोट शेयर था 18% और कांग्रेस का वोट शेयर, तो सबसे पहला तो अपोजिशन यूनिटी का जो बबल है वो कर्नाटका में फूटना है। देखिए, उसके पहले भी वैसे 2-3 छोटे राज्यों में चुनाव है। मेघालय में चुनाव है, त्रिपुरा में चुनाव है। अब त्रिपुरा में भी मुझे लगता है कि कई पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी वहां जोर लगाएगी, कांग्रेस वहां मौजूद है, बीजेपी की सरकार है, लेफ्ट भी स्ट्रांग है। तो अब देखना यह होगा त्रिपुरा में क्या होता है। लेकिन हाँ, आपने कर्नाटक की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और कर्नाटक में यह जरूरी होगा कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कुछ तालमेल हो, क्योंकि इस तालमेल इन पार्टियों का तालमेल करना दूसरी राज्यों की तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि जेडीएस का जनाधार बहुत लिमिटेड है, एक इलाके में है। तो ये संभवतः ज्यादा आसान है दोनों पार्टियों के बीच एक तालमेल हो, एक यूनिटी का मतलब एक अलायंस कर पाए। और अगर कर्नाटक में भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आपने जिस बात का जिक्र किया कि ये बबल बर्स्ट होगा, बिल्कुल कर्नाटक में अगर ये संभव नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले चुनावों में, आने वाले राज्यों में तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हमारे व्यूअर के कुछ सवाल हैं जो संजय जी से और डी के आपसे भी लेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं जो पूछ रहे हैं, प्रियांक उपाध्याय हैं, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ उनका इशारा है कि अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए तो बीजेपी का फ्यूचर क्या होगा और शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या वो सेंटर में आएंगे? उनका पॉलिटिकल करियर द एंड हो जाएगा? सिंधिया एज ए फेस। In fact, the bigger question is what happens to Shivraj Singh Chouhan, and he can answer it better. See, towards 2024, probably I think the BJP will be much more guarded. Right now, you see this undermining of Shivraj Singh Chouhan taking place, like his ministers talking about all these things. Many of ministers are taking dig at governance. In Rajasthan, again, you have Vasundhara Raje who is on her own trip. So will the BJP High Command assert itself and ask them to kind of make way for the Gen Next leadership, or will it stick to these leaders just to make it safer for the party ahead of 2024 election? I think Professor Kumar should be taking it further.
या प्रोफेसर कुमार, क्या आपको लगता है कि बीजेपी हाईकमान रीजनल छत्रप को वो फ्रीडम देगा हिमाचल के एक्सपीरियंस के बाद, या फिर उनकी जो ट्राइड एंड टेस्टेड लाइन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे ही इलेक्शन होंगे और रीजनल छत्रप अपने दाएं बाएं देखें अपना आगे का फ्यूचर? देखिए, ये सब डिपेंड करेगा जब चुनाव आएगा उस समय, जब जो कहते हैं कि धरती कितनी उपजाऊ है उसके हिसाब से बीज लगाया जाएगा। और अगर ये लगेगा कि धरती तो बिल्कुल ही बंजर है, तो शायद अपने अच्छे बीज कोई भी किसान बर्बाद नहीं करना चाहता। तो किस स्टेट में बंजर आपको लग रहा है? किस स्टेट में थोड़ा ज्यादा बंजर है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि धरती इतनी बंजर है कि बीजेपी एक अच्छे किसान के जैसा अपने बीज को, अच्छे बीजों को बचा के रखेगा कि कहीं और लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, जैसे गुजरात में कुछ समय पहले हुआ कि पूरी कैबिनेट बदल दी गई, चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान एक लंबी पारी खेल चुके हैं और बीजेपी की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि अगर आप बहुत सालों तक आपने एक पद संभाल के रखा, और कई बार कुछ मंत्रियों के साथ हमें ऐसे देखने को मिला है कि उन्हें कोई दूसरा पद दे दिया जाता है पार्टी का कार्यक्रम संभाले, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में कमान दे दी जाए। तो ऐसे कुछ मुझे लगता है चेंजेस की गुंजाइश है। और अगर ऐसे बदलाव के संकेत मिलेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने लाने की जरूरत पड़ेगी पार्टी को, क्योंकि अगर आप ये संकेत दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत के आती है तो मुख्यमंत्री मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी होने वाले हैं, तो मिस्टर ए के चेहरे पे तो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। त्रिपुरा की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि किस तरह से लेफ्ट के इतने बड़े साम्राज्य को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया, और आज की तारीख में वहाँ पे ढेर सारी एंटी इनकम्बेंसी है, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा बीजेपी को, और उसके बाद भी अभी भी एंटी इनकम्बेंसी है। BL संतोष थोड़ी दिन पहले गए थे, उन्होंने कहा कि भाई अलायंस के लिए आप जो मोथा है उसकी तरफ आंख टकटकी लगा के मत देखते रहिए। तो वहाँ पे आपको लगता है कि जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें बीजेपी इलेक्शन को निकाल पाएगी? देखिए, त्रिपुरा छोटा राज्य है। छोटा मतलब कई मायने से नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स भी हैं उनकी भी तादाद कम है। मुझे लगता है कि भले ही पिछली बार लेफ्ट की हार तो गया चुनाव लेफ्ट, लेकिन अभी जनाधार उनका बरकरार है। तो बीजेपी को थोड़ा संभल के चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है कि जनता का भरपूर समर्थन सरकार को मिल रहा है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर भी बदलने पड़े, तो थोड़ी सी शेकी बीजेपी दिखाई पड़ती है त्रिपुरा में। लेकिन अभी चुनाव में 3-4 महीने हैं, पार्टी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। लेकिन हाँ, बीजेपी थोड़ी सी शेकी है। जितना कॉन्फिडेंट आप कई राज्यों में बीजेपी को देखते हैं, वैसा कॉन्फिडेंस तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। So coming back to the Scindia question, do you see the BJP basically experimenting with new leadership in Madhya Pradesh or Rajasthan, or for that matter Chhattisgarh? See, I would find it very difficult to speculate, because as you know that I work in a research institute. I am not a journalist like you, where who people like journalists have gossip and speculation on every subject. What we call अंदर के हमें खबरें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। I have not done any research of that kind, and you can't do even a research of this kind, that what is BJP's thinking about whether they want to change or not. But still, if we look at the trend, there is an indication that BJP is in a process of BJP does a lot of experimentation, and one experiment is that you change, you allow new people to come to politics, active politics. And active politics means contesting election. Assembly का चुनाव लड़ रहे हैं या लोकसभा का चुनाव लड़ना है. If you have been in power, whether as a chief minister or as a minister or as an MP, I keep saying that I don't think we will find someone, except a couple of people who are very senior, that someone in BJP who can say that I am a 5-time MP or a 6-time MP or a 6-time, 8-time chief MLA. And if BJP finds such people, I think they try and put them in the work of the party and allow new people to come and contest on BJP's ticket. So if we go by this trend, and you can find this trend in many states, we were giving an example of Gujarat. हिमाचल में भी उन्होंने कई सिटी के MLAs की टिकटें काट दी. जब दिल्ली के MCD के चुनाव हो रहे थे, the same kind of strategy BJP applies in many states. So going by that, I think we might see something
some drastic, some new changes happening even in Madhya Pradesh. और अगर डेटा से उठाएं संजय जी, पिछले असेंबली इलेक्शन का और जो बीजेपी का वोट शेयर और कांग्रेस का वोट शेयर था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट उसमें अंतर नहीं था। और अगर आप देखें कि 2003 के बाद बीजेपी लगातार वहाँ से स्लाइड कर रही है। जब उमा भारती चीफ मिनिस्टर बनी उसके बाद से लगातार उनकी सीटें कम हो रही हैं, जो वोट शेयर है वो कम हो रहा है। ट्राइबल्स में पिछली बार ट्राइबल इलाके में बीजेपी एक तरह से साफ हो गई, वाइप आउट हो गई। तो डेटा आपको क्या कहता है कि किस इलाके में कांस्टेंट दिखता है, कहाँ पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम वाले इलाके हैं? देखिए, अभी ये कह पाना मध्य प्रदेश के बारे में मुश्किल होगा क्योंकि हमने अभी कोई स्टडी नहीं की, लेकिन डेटा हमें कुछ चीजों में मदद करता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि डेटा को भी हमें सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। इसी बात का जिक्र बार बार गुजरात में भी किया जा रहा था कि बीजेपी कैसे नीचे चलती जाती जा रही है। और 2002 के चुनाव से कंपैरिजन करते करते इस बात का जिक्र चुनाव के पहले बहुत हुआ कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देखें 2017 के चुनाव में 99 सीटें आई और कांग्रेस ने उन्हें रूरल ग्रामीण इलाकों में एक तरह से काफी मात दे दी, या बड़ी कड़ा मुकाबला रहा। सिर्फ अर्बन इलाकों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसी कारण बीजेपी 2017 में सरकार बना पाई। तो कुछ ऐसा ही विश्लेषण हमें मध्य प्रदेश में भी अभी देखने को मिल रहा है, लगातार नीचे जा रही है। पिछला चुनाव बिल्कुल कांटे का था, दोनों पार्टियों के बीच में वोट का अंतर नहीं था। लेकिन सिर्फ वोटर आंकड़े देख के तो वोट नहीं करता, वोटर को नहीं पता, आंकड़ों का से उससे कोई लेना देना नहीं। वोटर अपनी कंस्टिट्यूंसी में उम्मीदवार को देख के वोट देता है, और आज एक नया ट्रेंड आजकल है कि वो पार्टी के नेता को देख के वोट करते हैं। तो मुद्दे क्या होंगे, सरकार अभी कोई भारी असंतोष दिखाई नहीं पड़ता सरकार के प्रति मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका उल्टा न ही एक खुशी की लहर जिसमें कहें कि बहुत ही उत्साह दिखाई पड़ रहा हो। तो बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल डॉर्मेंट, एकदम नॉर्मल सी सरकार दिखाई पड़ती है। तो अभी इस बात का आकलन कर पाना मुश्किल है कि किस इलाके में कमजोर है, क्यों कमजोर है। वैसे मुझे लगता है कि कुछ जो ट्राइबल इलाके हैं उन इलाकों में बीजेपी थोड़ी शायद कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी से अगर आप समझने की कोशिश करें, प्रेसिडेंट एक ट्राइब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ट्राइबल होने के कारण उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश होती है। अब बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक जयंती के रूप में मनाना, तो ये सारे संकेत दिए जा रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आपके समुदाय के हितों की रक्षा करती है। और इसकी वजह ये भी है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि समुदाय के लोगों में हमारी पैठ उतनी नहीं बन पाई है जितनी बननी चाहिए, या जितनी बनी थी वहां से शायद थोड़ा वो खिसकाव दिखाई पड़ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। शंकर का क्वेश्चन जैसे था, से ही इज टॉकिंग अबाउट a gradual decrease in the BJP's vote share in MP. गुजरात was different. गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर कभी कमा नहीं, 48-49% लास्ट 4-5 इलेक्शंस में उनका कॉन्टिन्यूस रहा, इस बार उससे भी ज़्यादा हो गया। कांग्रेस का भी वहाँ पे स्टेबल था, अराउंड 40-39-40% रहता रहा गुजरात में सारे इलेक्शंस में। एमपी में दैट ट्रेंड इज नॉट देयर। एमपी में इट गोज अप डाउन एज इट डज इन हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। No, you're right. That, as I said, one needs to look at the data carefully. There is a difference in Gujarat and Madhya Pradesh. While in Gujarat, BJP's vote share always, even if BJP, and I kept saying that if people thought that BJP was on the verge of losing the election in 2017, it's wrong. Because even though BJP's vote share, even though BJP's seats came down to 99, but they left behind Congress by almost 8.5% vote, which is a huge margin. That's not the case in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, it was really a neck-to-neck fight between Congress and BJP in 2018 election. So that's going to pose a challenge for BJP, if I don't want to use the word difficulty. But it is a challenge for BJP. They know that BJP was on almost, they actually lost the election in 2018. So it is not going to be easy for BJP. They have to tighten their belt. And I'm sure being in power for the last 3.5 years, or a little more than that, they would have done some homework. So, but the point I'm trying to say is that yes, BJP knows, and they should realize that it is not going to be a cakewalk, or it is not going to be an easy election in Madhya Pradesh. It is going to be a real election again in 2023. Coming back to Karnataka,
See, if there is a setback in Karnataka, again, instead of saying setback, I would say if BJP loses, hypothetically, how will it impact the BJP's southern march? Because they have been putting a lot of focus on South India. So certainly, if we look at the southern march of BJP, it is the Karnataka is the opening door for BJP. If they lose in Karnataka, I don't think that that's going to have an impact on other states. BJP's support base in other states, say Telangana, Andhra, maybe Kerala and Tamil Nadu. Kerala, Tamil Nadu, they don't have to lose much. They have a lot to gain, but I don't see them gaining a lot in 2024 elections, either in Karnataka or in Tamil Nadu. Telangana, they are eyeing in a big way. A defeat in Karnataka is not going to have any impact, is not going to have an impact in Telangana, because the nature of contest in Telangana is different. It would have made an impact if BJP was contesting against Congress. The main rival would have been Congress in Telangana. Same nature of contest. But look at the 4 or 5 southern states. It's a unique case. Andhra is a different ruling party. Telangana is a different ruling party. Karnataka, different ruling party. You move to Tamil Nadu, a different ruling party, and in Kerala, different ruling party. So while all these 5 or 6 states sharing boundaries with each other, but there are all these, the nature of electoral contest in all these 5 states are entirely different. That is why I think that even if BJP gets defeated in Karnataka, it is not going to impact its victory, its march, or its efforts, making its effort of expansion in, say, Tamil Nadu, Kerala, or in Telangana. एक सवाल हमारे व्यूअर का और है संजय जी, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। पांडुरंग देशमुख साहब हैं, ये पूछते हैं डीके पहले आपसे कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, हालांकि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है 2023 में, लेकिन जिस तरह की अलायंसेस बीजेपी ने किया है, जो सरकार चल रही है, उनका अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। उद्धव के साथ उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड था। आपको लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ भी है महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को ज़्यादा पुल आउट करना पड़ेगा, ढेर सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कमज़ोर है शिंदे सरकार की। See, we'll have to see how this new coalition works, and BMC is the first test. After BMC election, probably we'll see if they turn out to be better. See, suppose if the Balasaheb Anchi Shiv Sena, the Eknath Shinde's faction, they have an upper hand in BMC election also, and they are able to somehow, share, if not dominate, or if not appropriate, the entire political legacy of Bal Thackeray. But if they are able to get even 60%, 70% of that, they become the real Sena. Then the entire thing will be different. But if Uddhav Thackeray faction has its way in BMC election, then again this coalition, there will be many question marks, and then we don't know how it will unfold from there. I think Professor Sanjay Kumar will be on this better. Yeah, I think what DK is saying is right, that first challenge is going to be for the Shiv Sena, which is the real Shiv Sena, not in terms of technicalities, legalities, but in terms of perception of the people. And the BMC election is going to be the real test for that. And if Shinde faction performs well, then I think Uddhav Thackre's party, Shiv Sena, will get further marginalized. But if there's a role reversal, if Uddhav Thackre's faction does well, then I think Shinde's faction will have bigger challenge to face when the state goes to poll in 2024. बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और 2023 का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो होराइजन है, उसमें ढेर सारे चैलेंजेज हैं, ढेर सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि 9 स्टेट के असेंबली इलेक्शन है जहां पर 120 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। वहां पर बीजेपी परफॉर्म करती है, बीजेपी को सेटबैक मिलता है, कांग्रेस का रिवाइवल होता है दक्षिण के राज्य से। ये सारे बड़े सवाल हैं जो 2023 में जनता के बीच में, जिस पे जनता मैंडेट अपना देगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सवाल, अपने जवाब और साथ ही अपने कमेंट्स जो हैं लगातार हमें भेजते रहें।